Hello dear children, hello all Python lovers, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. This is the second session on writing basic Python scripts. In the first session we did 5 Python scripts children, and I hope you have watched part 1. In case you haven't watched it, please do watch it before watching part 2. And in this session too, children, I'm going to take up 5 scripts, 5 statements, problem statements, and show it to you how to, develop a solution for those problems using Python. Again, sequential flow of construct and programs based on input, process, and output cycle. Right? So let's proceed to Python. As it opens, let us first see what is my first problem for the day. See, it says accept a number at runtime, print its square and cube. Fine. तो देखो बेटा इसमें you have to accept a number at runtime. Clear है? You have to take one number as the input. Processing के लिए you will find out n square and n cube, and then you will display the results of both the processed outputs. Fine. So देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं Python में. ठीक. As again I have coded the problems for you beforehand, and I'm going to show the code to you, explain it, and then run it and show it to you. वैसे ही बेटा, first 3 statements would be my single line comment entries indicating what is the purpose of the script, who has made it, and on which date it has been made. So let's proceed. देखो बेटा, input आपको करना है एक number user से लेना है. You've taken one number, converted using input function, converted typecasted to an integer using int function, and assigned to num object. ठीक. अब processing statements, we are required to do 2 tasks with num. One, I have to find out its square, so I am doing it in this manner, num raised to the power 2. Fine. So आपने n square कैसे निकालोगे? n double asterisk 2. So exponent operator आपने यहाँ use किया है, assign it to sq. ठीक. Then you have to tell, show what is the output of n cube. फाइन. सो n क्यूब आप कैलकुलेट करते हो n रेज टू द पावर 3 और आप उसको असाइन कर देते हो क्यूब ऑब्जेक्ट में. सो द प्रोसेसिंग इज ओवर. नाउ वी आर लेफ्ट विद द टास्क ऑफ डिस्प्लेइंग द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स. सो एज डन इन द फर्स्ट पार्ट हम फिर वैसे ही करेंगे, प्रिंट करेंगे. प्रिंट में हमने मल्टीपल आउटपुट्स को क्लब किया है. पहला स्ट्रिंग स्क्वायर ऑफ num. ठीक है, स्क्वायर ऑफ तक बेटा हम अपने पास से दे रहे हैं. देन कॉमा, देन आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ num. I'll write it without quotes, then again a comma, then I want to give equal to from my side. I put it in quotes, again a comma, and then what is the result of num square जो sq वेरिएबल में stored है, हम sq को दिखा देंगे. So sq is actually referring to num square. So we are going to show the output to the user in this manner. In the same manner, I have used print function and clubbed multiple outputs again. Cube of अपने पास से दिया है, ठीक है, as it is display होगा, comma, किसका cube निकाल रहे हैं हम? num का. So I'll write num without quote so that its value is shown here. Then comma, then equal to, I want to show in the result, I'll put in double quotes, then comma, and then children, the value of cube object, the value which is being referred to by cube object. So I'll put cube variable over here. Fine. So let's run this code and see the output. Enter a number. I write 5. Fine. So 5 square children is 25 and 5 cube is 125. So this is how I'll get to see the output in my Python shell. Okay. So we're through with script number 1 for this part 2. Let's proceed to script number 2 for part 2. It says accept a number at runtime, print its square root. अब आपको जो number लेना, again children, the problem is indicating that you have take as input a number, you have to find out its square root. Processing क्या होगी, उस number को आप square root निकालेंगे, and then you will show it to the user. So this is also very simple. Let's proceed. Let's open the script. See, accept a number at runtime, print its square root. Fine. So as usual पहले आप number लोगे user से num में, ठीक है, and उसके बाद
children, what you have to do, see square root आप जो you want to find out ना, square root के लिए we have a function sqrt in math module. Fine. So first of all, before using square root function, you have to import math module in your script. Fine. Then using the module name and dot operator, you will use the sqrt function, that is math.sqrt. और किसका square root निकालना है, you have to pass that number as an argument to this function. So आपने क्या लिखा है यहाँ पर, num, that is जो num हमने यहाँ enter किया है, math.sqrt function की help से I am finding out its square root, and whatever is my answer I am assigning it to the object sq_root. ठीक, अब हम इसको देखते हैं दो तरीके से. I've shown you the outputs. पहले without rounding it off, and in the second statement, I have rounded the result to 2 places. Let's see how this output is shown to us without rounding off and after rounding off to 2 places. I hope ये line आपको clear होगा. Square root of जो मैंने double quotes में दिया will be displayed as it is, then comma, then the value of num, then comma, then equal to from my side, then comma, and then the object name, that is sq_root. Round function is an inbuilt function, so हम उसको use कर रहे हैं for rounding of sq_root to 2 places. Let's run this script, children. See, I'll enter 2 out here. Fine. So my square root, if I have not rounded it off, fine. See, if I have not rounded it off, it is coming to me in, how many decimal places? Let's see. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 places after decimal. And in order to shorten it, this number of places, I have used the round function. And in that, I have rounded off the fraction portion to 2 places. Fine. So it's up to you. Whichever way you want to do it, you can do it. You have both the options before you. Fine. So we are over with script 7 also, children. Let's see what's, script number 2 also for the day. Let's see what script number 3 has to tell me. See, script number 3, very simple, children. Accept a number at runtime, print its factorial. Factorial क्या होता है बेटा? n factorial अगर आप लेते हो, suppose n की value 5 है, so it will be equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Factorial of 4 would be 4 into 3 into 2 into 1. So इस तरीके से आप factorial निकालते हो. You can use, in other programming languages you use a loop to do this thing. Python आपको एक built-in function देता है, again in the math module with the name factorial, and that, that reduces your this thing script length to merely 3 statements. Input लेंगे, factorial find out करने के लिए processing statement देंगे. ठीक है, हाँ, import math आपको करना पड़ेगा, and then you have to show the output to the user. Fine. So ready for it? Let's see how we can find out the factorial. See. See, accept a number at runtime, print its factorial. Fine. As usual आप number user से लोगे बेटा, num variable में आपने उस number का reference assign किया. Import कीजिए math module and then write very simple statement math.factorial and pass this num as an argument to it. Fine. So अब ये automatically built-in ये math module का function है. It will give the calculate the factorial of num and assign its reference to fact object. Fine. So अब आप इसको दिखाओगे. So simple बेटा, कोई loop use करने की जरूरत नहीं है. Just pass जो भी आपको number चाहिए उसका आप as argument pass कीजिए factorial function को. But before you use it, you should import math module. Don't forget that. और उसके बाद जब आप प्रोसेस कर लो, वैसे factorial of string अपने पास से थी, then comma, then the value of num, then comma, then equal to from my side, then comma, and then the object fact. Fine. बहुत आसान है, करके देखते हैं इसको. अब आप देखो मेरे साथ. See, 5 factorial अगर हम निकालते हैं, so it is 120. ये कैसे आया बेटा? इसको देखो, 5 into 4 ये वैल्यू है into 3 into 2 into 1. Add it. See, you get the same value, that is 120. So आप इस तरीके से इसको फैक्टोरियल को मैथ मॉड्यूल के फैक्टोरियल फंक्शन की हेल्प से वेरी सिंपल स्टेप्स में कर सकते हो. सिंपल एंड लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स में
कर सकते हो. Fine. So I hope you found it easy. Let's proceed to the next script for the session. See, next script और भी आसान है बच्चे. It says accept a number at runtime, print its absolute value. See, absolute value क्या होती है बेटा? Absolute value होती है कोई भी नंबर है उसकी absolute value हमेशा पॉजिटिव होगी. Fine. So if I say -5, its absolute value is 5, and if I say 5, its absolute value is 5 itself. So what it is, whatever number I'm taking, its absolute value is its positive value. It's positive representation. So बहुत आसान है Python में इसको भी करना. Let's see how we can do it. देखो, see the code and you'll realize how simple it is to do things in Python, children. Accept a number at runtime, print its absolute value. Number आपने input ले लिया. Processing कैसे करेंगे? Again, there's a built-in function abs, abs. You know, that has to be passed the number to जिसकी हमें absolute value निकालनी है, and rest is done automatically by abs. Abs की negative अगर वो value होगा, so its answer would come out in positive, and if the value is positive, its answer will remain unchanged. I mean, अगर आप -5 दोगे abs को, it is going to give you 5, and if you're going to give it 5, it is going to give you back 5 only, क्योंकि 5 already positive form में है. So again, output कैसे दिखाएंगे? Absolute value of then comma num comma then equal to symbol comma and a. ठीक है, जिसमें आपका आंसर आया है. लेट्स रन इट. abs फंक्शन बेटा बहुत सिंपल है, देखते हैं. एंटर अ नंबर. आई राइट -5. इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5. ठीक है, सो abs फंक्शन है. अब इधर भी करके देखो आप. abs ऑफ -5 निकालो, क्या आएगा? देखो, यू गेट 5. और अगर आप abs ऑफ 5 लिखते हो बच्चे, प्रॉम्प्ट पर करके अगर आप देखते हो इंटरैक्टिव मोड में, तो आंसर आपका क्या होगा? 5 ही रहेगा. ठीक है, सो लेट्स रन दिस कोड अगेन एंड पास इट अ पॉजिटिव वैल्यू. हमने एंटर अ नंबर किया, हमने 5 दिया. सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. हम इस कोड को फिर से रन करते हैं. एंटर नंबर. सबसे पहले हमने क्या दिया था? -5. so उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी 5. और अब अगर हम इसको दोबारा से एक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं बेटा, तो अनचेंज रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट फॉर्म में है. ठीक है, सो आई होप दिस कोड इज क्लियर टू यू एज वेल. सिंपल यूज ऑफ abs function which is built in function and your work is done. Let's see the last script for the session, and that is accept the value of base and exponent at runtime. बेस की वैल्यू आप लोगे और एक्सपोनेंट की वैल्यू आप लोगे, एंड यू हैव टू प्रिंट बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट. फाइन. सो दो इनपुट्स लेने हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट. प्रोसेसिंग क्या होगी? बेस, एक्सपोनेंट ऑपरेटर आप यूज कीजिएगा, रेज टू द पावर एक्सपोनेंट की वैल्यू रखिए, और जो भी आंसर आता है उसको यूजर को शो कर दीजिए. ठीक है, सो रेडी फॉर इट? लेट्स ट्राई इट. See, you have taken two variables, beta. We have taken two variables over here, b and e, and in that we have accepted the values of base and exponent separately. दो तरीके से मैं आपको उसको प्रोसेस करके दिखा रही हूँ. In method 1, I am using the exponent operator. Fine. So b raised to the power e आपने integers में convert किया है ना, तो आंसर आपका integer फॉर्म में ही आएगा. b एक्सपोनेंट ऑपरेटर को यूज किया है, e उसके साथ सेकंड वैल्यू दी है, सो b रेज टू द पावर e का रिजल्ट p1 में आ जाएगा, बिकॉज यू हैव यूज्ड int typecasting, integer typecasting for the values input by the user, so इसका रिजल्ट भी integer में ही आएगा. ठीक है, जब आप इस p1 को प्रिंट करोगे. फाइन. सेकेंड थिंग इज यू इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, एंड देन what you do? You use its pow function, pow function, math.pow, and pass the value of base and exponent as arguments. So math.pow का return type हमेशा float होता है. So whatever exponent, जो भी आपकी base और exponent की values होंगी, accordingly जो b raised to the power e calculate होगा, that answer will come out in terms of float. फाइन. सो p2 का जो डेटा टाइप होगा या p2 में जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो फ्लोट टाइप की होगी. ठीक. सो आई होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर. वन यूजिंग द ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, and second using the pow function, that is a part of math module which must be imported first before making use of pow function. Fine. अब print आप कैसे कराओगे? देखो, print b, that is the value of b raised to the power, हमारे पास से देंगे
ऑफ ई, कॉमा लगा के ई लिखोगे, कॉमा लगा के इक्वल टू लिखोगे बच्चे, एंड देन यू विल राइट P1. सो P1 का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है. एंड सिमिलरली जो आपने सेकंड मेथड से b रेज़ टू द पावर e फाइंड आउट किया है, उसका रिजल्ट P2 में है. सेकंड आउटपुट स्टेटमेंट आपको P2 का वैल्यू दिखाएगा. फाइन. सो लेट्स रन दिस कोड and see it for ourselves. Enter the value of base, I write 2. Enter the value of exponent, I write 3. देखो पहला आउटपुट आपका 8 आया बिकॉज उसमें आई हैव यूज्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड मोर ओवर आई हैव कन्वर्टेड बी एंड ई इनिशियली टू इंटीजर्स. सेकंड में जो मैंने बेटा पावर फंक्शन यूज किया, पावर फंक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स, ऑलवेज रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू, सो इसलिए हमारा आंसर आया है 8.0. ठीक है. सो दिस वाज हाउ these were the 5 scripts that we did today children, and I hope अब हमारे टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन करके 10 scripts हो चुकी हैं. I request all of you to please try them out और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. पार्ट 3 में मैं फिर से 5 scripts लेकर बहुत जल्दी आऊँगी. ठीक है. टिल देन आप पार्ट 2 को और पार्ट 1 को प्रैक्टिस करके परफेक्शन लेकर आइए. ठीक. और अगर आप परफेक्टली इस काम को कर पाए तो एट द एंड अगेन आई विल गिव यू अ टैगलाइन फॉर द कमेंट टुडे. अगर आप आज के वीडियो पर आप क्या कमेंट देंगे, सी यू गोइंग टू राइट प्रिंट yes ma'am लिख सकते हो, yes ma'am I can do it. Fine. So this was all with part 2 children. Till we meet again, God bless you and happy learning.